Hello class 11 students, good morning to everyone, welcome back. In the last video we studied about definite integral, okay, and the total integration, indefinite, indefinite, everything was over. Now we will study here, like in this video, why we are studying integration in physics, that is where it is applied in physics, that is application of integration in physics, okay. Similarly, in the previous videos, we studied application of differentiation in physics. Like if a position or distance or displacement is given in terms of time, f of t, t के expression की form में लिखा है, then we know how to find instantaneous velocity. Differentiate this x with respect to t. From there we will get instantaneous velocity v in terms of t. That I have written as g of t. In terms of t होगा. अगर तुम्हें वेलोसिटी पता है इन टर्म्स ऑफ टी, तुम इसको फर्दर डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टी, तो वहां से क्या मिल जाता है, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टी, राइट. तो अगर मैं ऐसे जाऊं, मतलब x को x दिया है एंड इफ आई डिफरेंशिएट आई विल गेट एक्सेलरेशन. नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन? उल्टा, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन. एक्सेलरेशन विल बी गिवन टू यू लाइक सी हियर. Instantaneous acceleration is given to you a. Since it is instantaneous acceleration, that means acceleration will be given in terms of t. Okay? From there we can calculate velocity. उल्टा कैसे? Acceleration को मैं लिख सकता हूँ dv by dt. Okay? Equals to f of t. Now what's the job is? Whenever we need to integrate, we need dt or dx. So what I'm doing? I'm doing variable separable. This step from here to here, this is called as variable separable. Variables को एक तरफ लाना. इधर t है ना, तो इस dt को इधर शिफ्ट कर दो, तो dv equals to f of t dt. Understand? Now variable separable हो गया. Now integrating both sides. Both sides we put the integration. Now integration of dv is v. Integration of f of t. Integrate करो, कुछ आएगा t के फॉर्म में, उसको मैं g of t बोल रहा हूँ. And plus c कब लगेगा कब नहीं लगेगा, that depends on question to question. Integration में intervals क्या होगा, that depends on question to question. That we'll discuss when we do the questions. Okay? So see, we have acceleration in terms of t. We written in the place of acceleration dv by dt and shifting the dt that side. After integrating, what I got? Velocity in terms of t मिल गया मेरे को. अब मैं इस velocity in terms of t से पोजीशन निकाल सकता हूं और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं. कैसे? What is velocity? dx by dt. This we know. Again variable separable dt दूसरा लेके आओ. Variable separable कर दिया. dx equals to g of t dt. Now variable separable हो गया. As soon as variable separable is done, now we can integrating both sides. Integrating both sides. So integration dx is x, integration of g of t. After integrating this thing, again you will get something in terms of t. उसको मैं h of t बोल रहा हूँ. Okay, so this is the thing we have to do in application of integration in physics. So let's do few sums. Then the things will be more clear to you. Okay. Okay, class. Let's do the first question under application of integration. Question number 1. The displacement of the particle is 0 at t equals to 0 and it is x at time t. Full stop. It is moving in positive x direction with a velocity which varies as v equals to k root x, where k is constant. Find the relation of variation of velocity with time. Now try to understand the question. Okay, जो दिया है छोड़ो, भूल जाओ, क्या निकालना है? Find the relation of variation of velocity with time. That means velocity का expression निकालना है in terms of time. मुझे ये निकालना है. This we need to calculate. Variation of velocity with respect to time, with time. Okay, that means we need a velocity expression in terms of time. But what we have? We have velocity expression in terms of what? Displacement. X is what? It's not given what is x. See? कहीं नहीं दिखा है x क्या है, लेकिन देखो it is moving along positive x direction लिखा है ना. तो when the body is moving along positive x direction, what is x? X is the displacement. Okay, ऐसा origin है. This is origin. The body is moving along positive x direction. That means these are what? X coordinates. X मान लो 2 है, फिर x 3 है, फिर x 4 है. That means what is x? X is this displacement. कितना दूर जा रहा है वो. Okay, so velocity in terms of displacement is given to you, but we need to calculate velocity in terms of time. Okay, so let's see what to do, how to do.
Now, what is velocity? K root x. In the place of velocity, I can write dx by dt. K root x. है ना? लिख सकता हूं ना velocity को ऐसा. Velocity का I can write dx by dt. This we know already. Yes, class? Understood? What we are doing, how we are doing. Is that clear? Everything? Okay, now see. It is not matching with the protocol. What protocol I have taught you? Acceleration in terms of time दिया होगा. Acceleration को dv by dt लिखना. फिर इंटीग्रेट करना तो velocity टाइम के फॉर्म में आएगा. फिर velocity को dx by dt लिखना. फिर इंटीग्रेट करना तो पोजीशन आएगा. तो velocity तो टाइम के फॉर्म में दिया होना चाहिए ना. एंड velocity से तो मैं पोजीशन निकाल सकता हूं. अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? इंटीग्रेट करने से तो velocity से तो velocity तो नहीं आ सकता ना. इट इज नॉट पॉसिबल. क्या मैं velocity से velocity ला सकता हूं? नहीं. मैं velocity टाइम के फॉर्म में दिया होना चाहिए. यहाँ पे velocity पोजीशन के फॉर्म में दिया हुआ है. अंडरस्टैंड? द होल क्वेश्चन इज लिटिल बिट डिफरेंट. इट्स नॉट मैचिंग विद द प्रोटोकॉल. अगर टाइम के फॉर्म में दिया होता तो वी कैन इंटीग्रेट. मोरओवर वेलोसिटी अगर टाइम के फॉर्म में चाहिए तो मुझे क्या दिया होना चाहिए? एक्सेलरेशन टाइम के फॉर्म में दिया होना चाहिए. ओके, एक्सेलरेशन अगर टाइम के फॉर्म में दिया होता देन वी कैन इंटीग्रेट. वी विल गेट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम. आर यू गेटिंग मी क्लास? बट इट इज नॉट गिवन इन दैट वे. इट इज गिवन समथिंग डिफरेंट. सो व्हाट टू डू? थोड़ा सोचो अच्छे से. थिंक अबाउट इट. तो क्या समझ में आ रहा है क्लास? ये समझ में आया that this question is not under the protocol. Velocity in terms of x is given to you, but in the protocol we have velocity in terms of time. एक गलती. दूसरा, velocity in terms of time I need in the question they ask for. According to protocol, for velocity in terms of time to निकालने के लिए I should have acceleration in terms of time. Do we have acceleration in terms of time? No. You understand? So what to do? So whatever is given to you, let's see from there what we can calculate. Okay? So velocity is given in terms of x. So from there I can write dx by dt is this. Understand? Now see, we have dx, we have dt. So what's the next job? Separate the variables. We have dx here. So shift x from that side. Okay, root x this side and k dt. So what I am doing here, variable separable I am doing. अब तुम लोग बोलोगे कि ठीक है सर, हमने तो ऐसे भी तो कर सकते थे ना, 1 by dt equals to k root x by dx. बट ये dt dx इंटीग्रेशन में ऐसा होता है ना, इधर होता है इंटीग्रेशन, 1 by नहीं होता है. So I cannot shift dx and dt to the numerator, sorry to the denominator. I have to shift the other terms. dx and dt ऊपर ही रहेगा, न्यूमरेटर में ही रहेगा. So ये dx इधर ही रहेगा. Understand? That means rest x term we need to shift in the other side. You understood class? So let's see. So that's why we have shifted in that way. Now, variable separable हो गया. So integrating both sides, dx by root x equals to k dt. So what is the variable here? dx, x is a variable. What is the time? What is the variable here? dt, time is a variable. यहाँ पे dt लिखा है, that means time is a variable. यहाँ पे dx लिखा है, मतलब x वेरिएबल है. तो आप देखते हैं लिमिट क्या डालेंगे. तो देखो लिमिट के बारे में क्वेश्चन में लिखा हुआ है. While studying the protocol theory, I told you limits and all will be given to you in the question. See, this is the limit. At t equals to 0, the displacement is 0. ये इनिशियल केस था. तो इधर वेरिएबल क्या है? t is 0. t is 0. t का वैल्यू कितना है? 0. What are these? Limits are variables value ना. जहाँ x का वैल्यू होता था, यहाँ पे वेरिएबल t है तो t का वैल्यू है. तो 0t में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है, तो 0. उसके बाद क्या है? डिस्प्लेसमेंट x है. डिस्प्लेसमेंट इट इज x. कब? when time is t. That means when the time is t, displacement is x. This is the value of variables we are substituting. Okay, so understand the limits. Now we have to integrate it. So how to integrate? Root x है, इसको मैं x to power minus half लिखना पड़ेगा. dx 0 to x equals to k bar integration of dt 0 to t. Understood? Now integrate करो. अब तो आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा. x to power minus half, x to power n plus 1 by n plus 1. Integration is over. After integration is over, what do you have to do? Put a bracket, write the limit.
Okay, k equals to k. What is integration dt? T again 0 to t. Understood? Now यहाँ पे तो अंदर वाले को सॉल्व करना पड़ेगा, then only we can do upper limit minus lower limit to solve it. Minus half plus 1 is half divided by half. Okay, 0 to x equals to k. इसको तो पुट कर सकते हैं ना, in the place of t put the upper limit, in the place of t put the upper limit. What is upper limit? t. So t यहीं पे डालो तो t आएगा, minus in the place of t put the lower limit. t की जगह क्या लेंगे? 0. Understood? Now this half will go up, बाहर आ जाएगा तो 2 will go up. What do you have? Root x 0 to x k t minus 0 is t. Now क्या करना पड़ेगा? In the place of x write the upper limit. What is x only? Minus in the place of x write the lower limit 0 equals to kt. So what I got? 2 root x equals to kt. Okay. So from the given expression of velocity in terms of x, we got 2 root x is kt. Now what I need? I need velocity in terms of time. तो ठीक है, इस रूट एक्स को हटा दो. ये देखो रूट एक्स कितना है, बस यही करना था स्पेशल और कुछ नहीं अलग है. तो रूट एक्स का वैल्यू मैंने इंटीग्रेट करके ला दिया, कितना है? kt/2. Therefore what is velocity? k into root x. So in the place of root x what we can write? kt/2. So what is velocity? k square t/2. तो आ गया velocity in terms of time, आ गया देखो. Okay, so only this root x I have to remove this. I have to substitute this root x in terms of time. So from integrating we got the value of root x in terms of time. So I'm substituting there. Job is done. Okay, so let's go to the next question first. Now see the next question, question number 2. The acceleration of particles starting from rest, varies with time as a equals to minus r omega square sine omega t. Find the displacement of this particle at time t. Okay. So now see what is given. Acceleration is given minus r omega square. This is omega. Okay. This is a special w which you write like this, and it's named as omega. Now it is pronounced as omega, but which physical quantity is represented? That is angular velocity. These things you will study in the course of syllabus. Okay. Now in angular velocity, अंडरस्टैंड, ओमेगा बोलते हैं लेकिन इसका नाम क्या है? एंगुलर वेलोसिटी. सो माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी. वी नीड टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट. सो दिस इज अंडर प्रोटोकॉल. हाउ कम? सी एक्सेलरेशन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम टी. टाइम टी के फॉर्म में दिया है, तो एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम टी इज गिवन टू यू. फ्रॉम देयर वी कैन फाइंड वेलोसिटी. इन द प्लेस ऑफ एक्सेलरेशन वी कैन राइट dv/dt equals to minus r omega square sin omega t. Now do the variable separable. t is here, dt नीचे है, इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा. सो dt को शिफ्ट कर दो इधर. हो गया. नाउ दोनों तरफ आ गया, वेरिएबल सेपरेबल हो गया. here we have dv, here we have dt. okay, so integrating both sides. Now listen very carefully. Integrating both sides. Here we have dv, that is we have velocity variable. Here we have dt, that is time is variable. Okay, understand? Now normally what we have to do, we have to put limits now. So how to put the limits? So what is the variable here? V. What is the variable here? Time. So what is given to you? Starting from rest. That means at t equals to 0, times of 0 है, तो velocity is 0 because starting from rest. Understood? Now after certain time t, velocity will be v. Understood? But ये तो दिया है, क्या ये दिया है? Moreover, starting from rest ऐसा तो लिखा है, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 लिखा है? नहीं लिखा है. दिस इज द वन प्रॉब्लम वी हैव. ठीक है. सो आई एम इमेजिनिंग ना कि टाइम 0 में वेलोसिटी 0 होगा. क्यों 0 होगा? क्योंकि इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. ओके, इसलिए ये 0 होगा. ये तो ठीक है, ये पार्ट ठीक है, बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. बट दिस इज इट मेंशन इन द क्वेश्चन द टाइम इज 0? Starting from 0, not mentioned. So I am considering the time is also 0. That is also clear. So this is also okay. But is it mentioned in the question that after time t velocity will be v? कुछ भी हो सकता है ना. तो यहां प्रॉब्लम हो गया. Moreover, we need to find displacement. कैसा कहीं बोला गया है कि t को 0 में कहां से स्टार्ट किया था?
which displacement started from. That means when we will about to find displacement, there also the limits are unknown to you. So in these type of questions, when the limits are unknown to you, we will not substitute any limits. Okay, and we will neither write C. In physics, that C is ignored. Okay, I told you while doing the integration that we are writing C such that mathematical formula should be correct. But when we do physics, we ignore the C. We don't write C. If you know the limits, we write the limits. If you don't know the limits, don't write. Simply integrate it, and whatever the answer is without C, that is the answer. Okay, we don't need to write C. So you understand here why we are not keeping the limits? Because the data are not sufficient enough to keep the limits. So let's integrating both sides. So what is integration of dV? V. Here dt is written, that is time is variable. So here we have time. Do we have time here? No. Minus r omega square is a constant. We'll take it out. So what is left with integration of sin omega t dt. Now how we integrate this? Sin t hona chahiye, but it is sin omega t. So I will consider this as t because this differentiation is constant. Differentiation of omega t, omega derivative of t is 1. Omega aayega na, constant hai. So we are doing chain rule. Sin t minus cos t, sin omega t minus cos omega t. We have imagined this as t. So divided by ddt of that term which you have considered as t. Understood? Now r omega square minus cos omega divided by omega will come out. Derivative of t. What is derivative of t? 1. Okay. So divided by omega. This. Now this minus I'm taking out. So it becomes plus r omega square cos omega t divided by omega. This is 1 na? So divided by omega. Divided by omega. Okay, so when you open it, omega will cancel out. So r omega cos omega t. So from there I got the value of velocity. But what we need displacement. So further in the place of velocity I can write dx by dt. Yes class. In the place of velocity we can write dx by dt. Now again dt variable separable करना पड़ेगा. Variable को separate करना पड़ेगा. dt को उधर लेके जाओ. Now integrating both sides. We cannot keep the limits because the data are not sufficient enough. So what is integration of dx? X equals to again dt. T is variable. That means these are constants. R omega take it out. So integration of cos omega t dt. Now what is integration? Again see integration of cos t we know. Sin t. But integration cos. In the place of t what we have? Omega t. Again chain rule. Cos omega t ka sin omega t divided by differentiation dt of the term which you imagined as t. ओके एंड इसका डिफरेंशिएशन ओमेगा होता है जो मैंने अभी सॉल्व किया तो मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया है. सो डायरेक्टली आई हैव रिटन r ओमेगा sin ओमेगा t डिवाइडेड बाय ओमेगा. ये ओमेगा कहां से है? इसको डिफरेंशिएट करो. ये रहा ओमेगा बार dt ऑफ t 1 होगा. ओके अगर यू मल्टीप्लाई ओमेगा विल कैंसिल आउट. फ्रॉम देयर वी गॉट instantaneous displacement at any time t. We got the expression. Okay class. Okay, next question. Okay, now see. This is the last question of the application of integration. Okay, let's read the question. Question number 3. The acceleration experienced by a moving boat after its engine is cut off is given by a equals to minus kv cube, comma k is a constant. If v0, okay, अब सुनो मेरी बात अच्छे से. हाँ, अगर ऐसा लिखा होता है ना तो हम बचपन में पढ़ते थे v0. Actually, its actual name is V0. हम इसको पढ़ते हैं V0. Sometimes we say V0. So don't get confused. V0, NOT, not means nothing but V0. Okay. If V0 is the velocity at cutoff, find the velocity at time t after the cutoff. Okay. Try to understand the question. What is happening? एक बोट चल रहा है. बोट का सडनली इंजन ऑफ हो गया, कट ऑफ हो गया. इसका मतलब क्या है? तो थोड़ी देर बाद जाके वो रुक जाएगा ना. इसलिए सी एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. दैट मींस रिटार्डेशन होगा, थोड़ी देर बाद जाके रुक जाएगा. तो यहां से भी समझ में आ जाना चाहिए एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. दैट मींस आफ्टर सर्टेन टाइम द वेलोसिटी बिकम्स 0. यू अंडरस्टैंड दिस? आफ्टर सर्टेन टाइम द वेलोसिटी बिकम्स 0. नाउ सो व्हेन द इंजन वाज कट ऑफ, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा ना उस बोट का. दैट इज गिवन टू यू. v0 इज द वेलोसिटी एट कट ऑफ. दैट मींस बोट जो चल रहा था, जैसे इंजन ऑफ हुआ, इंजन ऑफ हुआ, बोट नहीं रुका. इंजन ऑफ होते बोट थोड़ी रुक जाएगा. बोट तो थोड़ी देर चलने के बाद रुकेगा. सो इंजन ऑफ हुआ, जैसे इंजन ऑफ हुआ तब जो वेलोसिटी था बोट का वो है v0. ओके, एंड
एक टाइम बाद वो जीरो तो होना ही है वेलोसिटी, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आफ्टर सर्टेन टाइम t व्हाट इज वेलोसिटी. Okay, so acceleration is given in terms of velocity. See, so how to do? I will not solve the whole question because it is a homework. Some part you have to do. What is acceleration? Minus k v cube. Understood? Acceleration is minus k v cube. Now from acceleration we can write like this: dv by dt equals to minus k v cube. Again, it is not exactly like protocol. Acceleration should be given in terms of time. है क्या? Acceleration टाइम के फॉर्म में नहीं है. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था और जो लास्ट क्वेश्चन दोनों प्रोटोकॉल को मैनेज नहीं कर रहा. ओके, सो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के फॉर्म में. तो ठीक है, हम वेरिएबल सिंपल करते हैं. इधर dv है, दैट मींस द वेलोसिटी टर्म विल गो दिस साइड माइनस के dt. ओके, हो गया. ना वेरिएबल सिंपल हो गया, ना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, वहां से आ जाएगा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन माइनस के dt. डिफरेंशिएट करोगे तो इंटीग्रेट जब dv को करोगे तो v आएगा ना. सो इफ यू इंटीग्रेट दिस थिंग you will get the velocity expression here. Now after integrating we need to check whether we can substitute the limits or not. So is the data sufficient enough? So yes, see nicely the time starting from where engine cut off है वहां का velocity दिया हुआ है v0. okay, और find the velocity at time t after the cut off. मतलब क्या, ये टाइम t कट ऑफ होने के बाद का टाइम है. दैट मींस कट ऑफ में कितना टाइम है? जीरो. सो कट ऑफ में जीरो टाइम है. आफ्टर टाइम t, फॉर एग्जांपल कट ऑफ के 10 सेकंड बाद बोट ऐसे है, बोट, दिस इज बोट, ये ऐसे चला, यहां पे बोट कट ऑफ हो गया. उसके बाद 10 सेकंड, दैट मींस दैट 10 सेकंड विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड एंड एट हियर ना. सो दैट मींस हियर व्हाट इज 0 सेकंड्स एंड एट 0 सेकंड व्हाट इज द वेलोसिटी? v0. जब कट ऑफ हुआ था वेलोसिटी कितना था? v0. So after 10 seconds कितना velocity? That is v we need to calculate. Understood? So at t equals, you understood why time is 0 I am taking? Because the calculation is at from t0. See, from the cutoff is written find the velocity at time t after the cutoff. Cutoff होने के टाइम t बाद, मतलब कटऑफ जब हुआ ओपन 0 सेकंड्स था, वहां से कैलकुलेशन स्टार्ट हुआ है क्या टाइम का. ओके, तो 0 सेकंड्स वेलोसिटी इज v0. तो आफ्टर t सेकंड we need to count the velocity. Select the velocity is v after t. Okay, थोड़ा टाइम t बाद, यहाँ पे I have taken 10 seconds for example. So after time t velocity is v. So after time t velocity is v. So now this is your homework. You have to integrate this, solve it and calculate v. Okay, पूरा solve करके v को एक तरफ रखना, बाकी को उधर लेके चला जाना. So whatever the expression you will get, that is the answer. I am writing the expression for you. Finally, the velocity which you will get will be something like this: v0 divided by under root 1 plus 2k v0 square t. ये आना चाहिए. ओके, v equals to v0 by divided by under root के अंदर 1 plus 2k v0 square t. So this should be your answer. Okay, now I am giving you this whole like almost till Saturday time. Your job is to do these questions, ask me, everything should be clear by Saturday. Okay, thank you class.